रहा है। और सिर्फ ये यूएपीए और एनआईए की बात नहीं है, आज तो हम देख रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इतना ज़बरदस्त मिसयूज़ हो रहा है, इतना ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हैं, एक्टिविस्ट के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ, और 95% जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस हैं वो सब ऑपोजिशन पार्टीज़ के खिलाफ है। ज़बरदस्त दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसीज़ का और कानूनों का। मार्केटिंग एजेंसीज जो सीबीआई से भी ज़्यादा अहम हो गई हैं आज के दौर में, उनका अपॉइंटमेंट पूरा की पूरा सरकार के हाथ में है। और देखिए, ये इसलिए मिसयूज़ हो रहा है यूएपीए क्योंकि इसमें दो ऐसे प्रोविजंस हैं, और भी हैं लेकिन दो ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको आसानी से मिसयूज़ किया जा सकता है। अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में उन्होंने लिख दिया कि अगर आप हिंदुस्तान के खिलाफ डिसअफेक्शन प्रमोट कर रहे हैं कुछ भी कह के, अब पुलिस वाले तो कहते हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन प्रमोट कर रहे हैं तो यही तो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है, प्राइम मिनिस्टर भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए आप अनलॉफुल एक्टिविटी कमिट कर रहे हैं। और दूसरी जो प्रोविज़न है वो बेल की। बेल का नॉर्मल कानून ये कहता है कि भाई आप को बेल देनी पड़ेगी अनलेस 3 में से एक कंडीशन प्रेजेंट हो। पहली बात कि आपको अगर बेल दी गई तो आप भाग जाएंगे, आप ट्रायल ही नहीं अटेंड करेंगे। दूसरा, बेल दी गई तो आप एविडेंस से टैम्पर करेंगे। तीसरा, आपने बहुत कोई ख़तरनाक ऑफेंस किया है, बेल दी गई तो आप इस तरह के और ख़तरनाक ऑफेंस रिपीट करेंगे, नहीं तो आपको बेल देनी पड़ेगी। लेकिन इस कानून में, यूएपीए में ये लिखा है कि मैजिस्ट्रेट तब तक बेल नहीं देगा जब तक वो ये ना रिकॉर्ड करे कि भाई इस अक्यूज के खिलाफ तो कोई प्राइमा फेसाई केस भी नहीं। तो अगर एक झूठा विटनेस का बयान पुलिस ने किसी के खिलाफ लिखा दिया है तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल के पहले कैसे बोल देगा कि भाई ये विटनेस का बयान झूठा लगता है या झूठा है? तो ऑब्वियसली बेल बेल देना बहुत मुश्किल कर दिया गया है इस कानून में। और इसको और ख़राब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया जिसमें यह कह दिया कि बेल देते समय कोर्ट ये भी नहीं देखेगा कि जो एविडेंस इसके खिलाफ दिया जा रहा है ये एडमिसिबल है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। तो इसके चलते हुए ये कानून जो है मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक हो गया है। और ये दो प्रोविजंस तो बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं। एक केस में हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इतने साल से इस कानून के तहत इतने सारे अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेल में पड़े हुए हैं, 5-5 साल से ट्रायल भी नहीं शुरू हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। कायदे से तो इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए था कि गैर संवैधानिक है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है। तो ये कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज जो एजेंसीज इस कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, एनआईए, ये सरकार की कठपुतली बन गई है। इट्स बिकम ए पपेट of the state, of the government, and that is why it is using this law to harass, intimidate, incarcerate activists who are opposing the government, activists who are opposing the development model, activists, journalists, politicians, सभी को इसमें इम्प्लिकेट किया जा रहा है। और सिर्फ ये यूएपीए और एनआईए की बात नहीं है, आज तो हम देख रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इतना ज़बरदस्त मिसयूज़ हो रहा है, इतना ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पीएमएलए में चल रहे हैं, एक्टिविस्ट के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ। और 95% जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस हैं वो सब ऑपोजिशन पार्टीज़ के खिलाफ है।
और हम देखते हैं जैसे शरद पवार, ये सॉरी है अजीत पवार और इस तरह के जो लोगों को ये लोग इम्प्लिकेट करते हैं, जैसे ही वो सरकार ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसीज का और कानूनों का। पीएमएलए को ले लीजिए, यूएपीए को ले लीजिए, या इस तरह के और कई सारे और भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स का, सीबीआई का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, सभी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए, और देखिए ये जो मिसयूज़ है या ये कानून है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भाजपा ने बनाए हैं या भाजपा ही इसको यूज़ कर रही है। जब जहाँ जहाँ ऑपोजिशन को चांस मिलता है वो लोग भी इसका मिसयूज़ करते हैं। अब कम से कम उन लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जब उनके खिलाफ इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया गया है तो सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये बड़े खतरनाक कानून हैं और इस तरह से एजेंसीज़ का दुरुपयोग करना बहुत ही हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। और अब जो इन लोगों का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, देखिए सीबीआई डायरेक्टर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अपॉइंटमेंट जो है वो एक कमेटी के द्वारा होगा जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का अपॉइंटमेंट पूरा सरकार के हाथ में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का। उसी तरह से एनआईए चीफ का अपॉइंटमेंट पूरा सरकार के हाथ में है। तो बहुत ही क्रिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो सीबीआई से भी ज़्यादा अहम हो गई हैं आज के दौर में, उनका अपॉइंटमेंट पूरा की पूरा सरकार के हाथ में है और उसका मिसयूज़ करके सरकार उनको अपनी कठपुतली की तरह यूज़ कर रही है। तो ये भी सबको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो क्रिटिकल एजेंसीज हैं, इनका अपॉइंटमेंट जो है, इनके डायरेक्टर्स वगैरह का अपॉइंटमेंट एक स्वतंत्र कमेटी के द्वारा होना चाहिए। तो खैर, मैं जो बातें कही गई उन सबको सपोर्ट करता हूं कि यूएपीए तो बिल्कुल इसको रिपील होना चाहिए कायदे से। मेरी राय में पीएमएलए को भी उसके ज़्यादातर प्रोविजंस को रिपील होना चाहिए। ये सब बिल्कुल गैर संवैधानिक ड्रैकोनियन कानून बनाए गए हैं जिनका कोई लोकतांत्रिक देश में कोई वजूद नहीं है। इन पर्टिकुलर इज़ बीइंग मिसयूज्ड to incarcerate and harass, intimidate totally innocent people, people who are either fighting against this development model of looting resources for the benefit of a few large corporates, or people who are fighting against the fascist government or the destruction of institutions which is going on. Now, how is this achieved? How is this enabled? So there are two ways that this kind of harassment and incarceration of totally innocent people who are opposing either the development model or opposing the government in any way is being achieved. One is that UAPA is draconian for several reasons, but two in particular. One is the definition of unlawful activity under the UAPA. So the definition says anybody who promotes disaffection against India is committing an unlawful activity. If you remember sedition said promoting disaffection against the government. The only difference between UAPA and sedition is that there the word government is used, here the word India is used. But otherwise, even criticizing, in sedition, criticizing the government was sedition, and that is why the Supreme Court has recently effectively stayed the use of the sedition law. But UAPA continues, and now what is disaffection against India? If you criticize the government, if you criticize the Prime Minister, a lot of these officers who are in charge of implementing UAPA can charge you by saying that, look, after all, the Prime Minister represents India, the government represents India. Therefore, if you are criticizing the Prime Minister or the government,
you are effectively promoting disaffection against India, and therefore you are committing an unlawful activity. That is, of course, one way in which they can implicate anybody who is criticizing the government or criticizing the Prime Minister or even some ministers, etc., under UAPA. Of course, that is apart from the fact that in many cases absolutely false charges of conspiring to murder the Prime Minister have been leveled, like against the Bhima Koregaon activists or the Bhima Koregaon accused, who are some of the finest human rights activists in the country. They have been implicated on the basis of fabricated emails inserted in their computers, on the basis of which it is claimed that these people were conspiring to kill the Prime Minister. Absolutely absurd allegation, and on the basis of fabricated emails inserted in their computers, which have been found by forensic laboratories across the world. And yet, those people remain in jail without a trial even after 5 years. So for 5 years without a trial they remain in jail, and the reason why they don't get bail is because the provision for bail in UAPA is very different from the normal provision for bail. Normal provision for bail is, normal law for bail is that bail is the right, jail is the exception. Bail has to be granted to somebody under investigation or under trial unless one of three conditions is satisfied. One or more of three conditions are satisfied. Number one, that there is reasonable ground to believe that if granted bail, he will flee and not be available for trial. Number two, if granted bail, he is likely to tamper with evidence. Number three, that he has committed a very heinous offense, and if granted bail, he is likely to repeat such heinous offenses. These are the only three reasons on which bail can be denied under the ordinary law. But under UAPA, there is a provision which says that no court shall grant bail unless it is satisfied that there is no prima facie case against the accused. Now, how do you come to the conclusion before the trial, sometimes even before the investigation is completed, that there is no prima facie case against the accused? This reverses the whole burden of proof. You see, under criminal law, in order to be, your guilt has to be established beyond reasonable doubt. Here for bail they are saying that you have to establish that you are innocent beyond reasonable doubt in order to be entitled to be given bail. Now, even if the police investigation says that, look, one person, some eyewitness has claimed that he saw such and such a person doing this, that or the other, that may be a totally false statement. But how can, even before the trial begins, how can you prove that there is not even a prima facie case against you? Absolutely absurd provision for bail. We have challenged it in one of the cases which is pending in the Supreme Court. Unfortunately, this is still being applied. And to compound the matter further, in one recent case, the Supreme Court, one judge who gave this Teesta Se Talwar judgment, thereafter that Himanshu Kumar judgment of Chhattisgarh, thereafter the UAPA not UAPA, PMLA judgment, that same judge in one particular case, what's the name of that case? Watali. It's known as the Watali case, has held that at the stage of granting bail, the judge or the magistrate cannot even go into the admissibility or the legality of the evidence which the police or the investigating agency is seeking to use against the accused. That means even if the court finds that the evidence that the police is seeking to use against the accused is totally illegal,
inadmissible, even that cannot be used to grant bail to the accused. So unfortunately, see, by now the courts should have realized that this is a totally draconian law, and these provisions, at least the definition, this totally liberal definition of unlawful activity, and secondly this provision for bail, at least these two provisions should have been struck down by now. Also, so many people are still in jail without trial for 5 years. In the Bhima Koregaon case for more than 5 years, in the Delhi riots case for more than 3 years, in the Kashmir cases for more than 5 years, etc. And yet, the court is just watching without doing anything. That the trial is not starting. These people continue to be in jail. They are being denied bail. And the court is just watching without doing anything. So of course, the main people to blame, of course, the law is to blame, but more than that, the agencies which are implementing the law, the NIA, which has been given the sort of prime responsibility to implement this law. Of course, there are many agencies today which are being misused. The Enforcement Directorate. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।